नमस्कार, मैं डॉक्टर चैतन्य ओक और हम देख रहे हैं हमारा चैनल क्रिटिकल केयर बेसिक्स। उसमें हम ECG ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं एंड दिस इज द 23rd ECG ट्यूटोरियल वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट 3 कंडीशंस. One is sinus tachycardia, postural orthostatic tachycardia syndrome and inappropriate sinus tachycardia. Right? So चलते हैं sinus tachycardia. साइनस टैक्यकार्डिया बहुत कॉमन चीज है, राइट? उसमें क्या होता है? PQRS is normal, the ECG is showing clear cut sinus waves, PR interval normal, QRS interval normal, QT interval normal, everything normal, but the rate is high. Sinus node is firing at a higher rate. Sinus tachycardia is a normal physiologic response. So जब भी sinus tachycardia होता है, आपको ये देखना है कि साइनस टैक्यकार्डिया हो क्यों रहा है और जो कारण है उसको ट्रीट करना है. आपको साइनस टैक्यकार्डिया हार्ट रेट कम करने का ड्रग्स नहीं देना है, राइट? बिकॉज दिस इज अ रिस्पॉन्स टू समथिंग एब्नॉर्मल हैपनिंग इन द बॉडी एंड यू हैव टू फाइंड आउट एंड ट्रीट इट. कभी-कभी रेयरली ऐसा होता है कि देयर इज नथिंग एब्नॉर्मल, देयर इज नो एविडेंट कॉज ऑफ साइनस टैक्यकार्डिया, फिर भी हार्ट रेट जाता है. दैट इज समथिंग कॉल्ड एज इनएप्रोप्रिएट, अनुचित, अयोग्य साइनस टैक्यकार्डिया, right? So this is very rare. This is diagnosis of exclusion. हम उसके ऊपर आएंगे. And lastly, sinus tachycardia is one of the most commonly encountered and often overlooked problem, right? So if there is some tachycardia going on in ICU, you have to find out why the patient is tachycardic. For example, हमारे पास एक young लड़का है, 25-26 साल का होगा. He sustained an accident. He sustained traumatic amputation of right thigh, and naturally when he came to our hospital he was in shock. Heart rate was above 140, so that was class 4 hemorrhagic shock. अभी आएगा बाद में. When we examined him, he had a surgical emphysema in the right iliac fossa, right? Surgical emphysema मतलब चमड़ी के नीचे हवा, right? So I thought there's probably a bowel injury. So we decided, we talked to the surgeon and we resuscitated the patient, immediately shifted him to OT. Or we did, he was bleeding from the thigh, so did a revision amputation, and we also opened the abdomen. Unfortunately, कोई bowel injury मिली नहीं, so it was a negative laparotomy. We closed, came out. Patient was shifted to ICU. 4-5 दिन के बाद भी the patient had persistent high-grade fever and high-grade tachycardia, like heart rate 150 odd. समझ में नहीं आ रहा था. Physician saw the patient and antibiotics were escalated. He was on the top of antibiotics. Parantu the tachycardia was still there. I was worried. So I talked to the surgeon, are we missing something? Is there some problem in the abdomen that we cannot see, or should we get a CT, or should we do a re-exploration? Surgeon said, oh come on, don't push panic button. Patient is in ICU, he is bound to have tachycardia, he has fever. Okay, but on 9th post-op day, he had fecal fistula from the scrotum. So he did have a bowel injury, and the bowel injury made a fistula, and the fecal matter came out of the scrotum. So the point I wanted to drive in was कि जब भी there is tachycardia, keep on looking for the causes of tachycardia, right? So this is often overlooked, especially if the patient has heart problem. That brings us to क्या कारण हो सकते हैं tachycardia के? So it could be dehydration or hemorrhage, volume depletion. For example, a patient is in ICU, and suddenly the patient has developed sinus tachycardia. So patient is probably unconscious. He is taking aspirin. So you just put on a rice tube and find out whether the patient has bled in the abdomen, in the stomach. So this is how you try to work out. And सोचना, बार-बार सोचना पड़ता है कि पेशेंट को ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, वॉल्यूम डिप्लीशन तो नहीं हो रहा है. इज द पेशेंट इन शॉक? पेशेंट अगर हाइपोटेंशन है तो हार्ट विल बीट फास्टर टू कॉम्पेंसेट. इज द पेशेंट इन सेप्सिस? सेप्सिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ टैक्यकार्डिया. सो इफ द पेशेंट इज टैक्यकार्डिक, जस्ट फाइंड आउट कि कहां सेप्सिस हो सकता है. एनीमिया, otherwise stable patient having tachycardia could be just anemic, so just try to correct. Hypoxia, hypoxemia, अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, so patient can have tachycardia.
Tachycardia can have, tachycardic patient can have pain or anxiety. So always keep the patient pain free in ICU. Cardiac causes could be acute coronary syndrome or heart failure. If the patient is developing tachycardia, otherwise a patient, old patient है और heart rate बढ़ता जा रहा है, आपने fluid resuscitate किया है किसी कारण से, तो tachycardia could be the first signal that the patient is going in volume overload. So just keep on seeing whether the patient को ज़्यादा fluid तो नहीं चला गया. Endocrine causes, two important endocrine causes. The common one is hyperthyroidism, or much less common pheochromocytoma. Even a lung disease can cause tachycardia, especially pulmonary embolism. Right? If, for example, a 60-year-old patient gets admitted with fractured femur and otherwise is comfortable, but then after say 4-5 days he starts becoming tachycardic, tachypneic, hypoxemic and hypotensive, probably you are looking at pulmonary embolism. So keep a high index of suspicion for pulmonary embolism in patients who are not moving along. Drugs से भी हो सकता है. For example, simple caffeine can cause. Beta agonists most commonly used are isoprenalin or aspirin, and anticholinergic like atropine. And drug withdrawal, कुछ drugs बंद करने के बाद reflex tachycardia होता है, and the most common are beta blockers. The patient is tachycardic, and first you have to ensure whether the patient has sinus tachycardia or something else. Sinus tachycardia कैसे देखेंगे? P, Q, R, S, T सब देखना चाहिए. अब यहाँ देखो, P is not clearly discernible. So you have to see multiple leads. Most commonly P is seen in V2. And that is the best lead to see P wave. But you cannot see proper P waves here. So are we dealing with supraventricular tachycardia? Are we dealing with something else? In this case, you see a P wave, typical P wave, biphasic P wave with a terminal negativity of more than 0.04. So the patient has in fact sinus rhythm and the patient has left atrial abnormality. So this is sinus tachycardia. So first go through ECG, देखो कि ये सही में sinus tachycardia है कि नहीं. In this example, the patient has a wide complex tachycardia. P wave दिख नहीं रही है, तो now आपको लग रहा है कि probably this could be sinus tachycardia, something else. This patient was given adenosine. Adenosine reduces the sinus rate, and now what do you see? Typical sawtooth appearance. अभी बाद में आएगा, अपना flutter का ECG lecture हुआ नहीं, but there is no isolated baseline seen. Typical flutter waves and very ventricular conduction. 1, 2, 3, 4. 4:1 conduction here. So यहाँ पे क्या था? This was 2:1 flutter and not sinus tachycardia. Right? So treatment is different. So always check whether we are dealing with sinus tachycardia. Similar case. अब ये केस में थोड़ा सा evidently दिखता है कि this is not sinus, but there are some cases वहाँ पे sinus tachycardia and atrial fibrillation could be confusing, especially if you see only on the monitor. यहाँ पे देखो, it is looking PQRS is narrow. You don't see P waves, and the RR interval is changing, right? So the RR interval is changing. कभी-कभी RR interval इतना कम change होता है कि आपको कैलिपर से गिनना पड़ता है, right? So sometimes atrial fibrillation, वो भी अभी लेक्चर होना है atrial fibrillation का, but atrial fibrillation with fast ventricular rate can sometimes confuse you with sinus tachycardia. हमारे साथ ये हुआ है. Atrial fibrillation था, fast ventricular rate था, हमने sinus tachycardia सोच के पूरा वर्कअप कर रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, and finally हमने कैलिपर से देखा तो it was RR interval of changing. ये स्लाइड मैंने इसलिए इंक्लूड की कि hemorrhagic shock can be sometimes missed if we don't see at the tachycardia. Right? So suppose a patient comes with a heart rate of 120 or more than 140. So he's already in class 3 and class 4 hemorrhagic shock. मतलब हमको मालूम है कि hemorrhage हुआ है, but हमको समझ में नहीं आता कि hemorrhage इतना हुआ है ना? उसकी गंभीरता समझने के लिए you should have this chart as a ready reference. So if the heart rate is more than 120, it is already class 3 hemorrhage. If it is more than 140 and the patient has decreased blood pressure and the patient is confused,
then this is class 4 hemorrhage. ये modified early warning system ये आजकल सब वार्ड्स में रखा जाता है, so that कोई भी पेशेंट क्रिटिकल होता है तो उसको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया जाना चाहिए. So उसमें 5 पैरामीटर्स यूज करते हैं: रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. उसमें पूरा ग्लासगो को मास्क करके कुछ नहीं, सिंपल पेशेंट कॉन्शियस है, रिस्पॉन्सिव है, अनरिस्पॉन्सिव वाटर एंड टेम्परेचर. सो उसमें सब कुछ नॉर्मल है, तो पेशेंट का जो टोटल स्कोर है दैट इज 0. फॉर एग्जांपल इसमें हार्ट रेट अगर 100 से 110 है तो ही गेट्स 1 पॉइंट, अगर 110 से 129 2 पॉइंट्स और मोर और इक्वल देन 130 सो पेशेंट गेट्स 3 पॉइंट. सो देखो यहाँ पे म्यू स्कोर ऑलरेडी अगर 3 हार्ट रेट 130 है तो पेशेंट ऑलरेडी इज इन येलो जोन. ग्रीन जोन मतलब पेशेंट इज ऑलराइट, है ना, आउट ऑफ डेंजर. येलो जोन मतलब पेशेंट को बार-बार मॉनिटर करना पड़ रहा है. और साथ में अगर थोड़ा सा बीपी कम हुआ या रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा, देन द पेशेंट इज इन ऑरेंज danger zone and red patient is critical. So tachycardia is an important component of the mu score. ये इसलिए मैंने 2 स्लाइड्स इंक्लूड की कि अपने को ये देखना है कि tachycardia should not be taken lightly, है ना. पेशेंट का कई बार मैं सिस्टर्स को देखता हूँ, सिस्टर कितना हार्ट रेट है सर 130, लिख दिया फाइल में. दैट इज नॉट द थिंग. If the heart rate is 150, you have to check whether the common conditions like fever, hypertension are there. If these conditions are absent, then the patient requires a detailed workup as to why the patient has tachycardia, right? Sinus tachycardia. तो हमको जो causes हैं उनको मन में लाके just try to rule out those causes. The most common is anxiety and pain, है ना. अभी जो नया फोकस है कि no patient should have pain in ICU. So patient could be tachycardic just because of pain. Or another common reason, patient ventilator पे है, patient paralyzed है पर proper sedation नहीं है. तो आप इस चीज की कल्पना करके देखिए कि आप वेंटिलेटर पे हो, आप पूरे होश में हो, पर आप उंगली भी नहीं हिला सकते, कितना अनकंफर्टेबल फील करते हो, right? So inadequate sedation, inadequate pain relief can give rise to pain and anxiety, which can cause significant tachycardia. So if a patient on ventilator is not febrile and having tachycardia, to think whether the patient has some problem which needs to be corrected. Is the patient volume depleted, dehydrated है, या volume overload में जा रहा है? Is there is history or any finding which could suggest sepsis? Are we looking at acute coronary event? And lastly, endocrine cause like hyperthyroidism or fibrosis. तो जो कॉज अपने को लगा है उसको ट्रीट करना. फॉर एग्जांपल इफ द पेशेंट इज वॉल्यूम डिप्लीटेड, गिव फ्लूइड्स. इफ यू थिंक द पेशेंट हैज हेमरेज, गिव ब्लड, पैक सेल्स. इफ द पेशेंट इज हाइपोक्सेमिक, राइट, सो टेक केयर ऑफ द ऑक्सीजन, टेक केयर इफ रिक्वायर्ड, गिव वेंटिलेटरी सपोर्ट. इफ द पेशेंट हैज एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम और रिकरेंट इश्चेमिया, so start the patient on the line of treatment of acute coronary syndrome and think of early revascularization. अगर हार्ट फेलियर और वॉल्यूम ओवरलोड में है तो treat heart failure. If the patient is in sepsis, go start the sepsis protocol and treat the sepsis. Any other cause of hypertension, find out the cause, look into the cause and treat hypertension. अभी कभी-कभी रेयरली ऐसा होता है कि पेशेंट हैज टैकिकार्डिया, आपने रिवर्सिबल कॉजेस जितने मिले आपने देख लिए, बट यू कैन नॉट फाइंड एनी डेफिनेट रिवर्सिबल कॉज. देन यू मे स्टार्ट इवेपोरेटिंग. कई बार ऐसा होता है कि टैकिकार्डिया है, आपने सब कुछ देख लिया, देयर इज नो एविडेंट कॉज. सो देयर आर two drugs, 2 classes that you can start. Evaporating, the evidence is 2AB, or beta blocker 2AC. Right, so the preference is to evaporating because beta blocker can reduce cardiac contractility and it could reduce it could induce asthma. So ये देने के बाद, 1 या 2 ड्रग देने के बाद भी the patient is still symptomatic, और आपको ऐसा लग रहा है कि probably there could be sinus node reentrant tachycardia. Because जैसा आपने देखा था पिछले लेक्चर में sinus node reentrant tachycardia कि it looks very similar to sinus tachycardia except that it is
पैरोक्सिस सडनली आता है, सडनली जाता है। सो अगर आपको लगता है कि ये साइनस टैकिकार्डिया नहीं है पर शायद साइनस नोड रीएंट्रेंट टैकिकार्डिया हो सकता है, देन आपको देखना है कि ड्रग थेरेपी डिजायरेबल है क्या, मतलब डू यू रियली वांट टू स्टार्ट अ ड्रग, पेशेंट को इतनी तकलीफ है क्या, अगर यस तो देन यू कैन थिंक ऑफ एडिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अगर ऐसा लगता है कि नहीं काम चल रहा है, यू नीड नॉट ट्रीट, तो यू कंटिन्यू विद इवाप्रेडिन एंड और बीटा ब्लॉकर। एंड लास्टली अगर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा परेशानी है, ड्रग्स से कंट्रोल नहीं हो रहा एंड यू थिंक दैट द पेशेंट हैज sinus node re-entrant tachycardia, then you may consider catheter ablation. अभी तक जो डिस्कशन था that was about sinus tachycardia, right? Sinus tachycardia मतलब there is some problem, उसके कारण heart is physiologically responding by increasing the heart rate, sinus rate. But inappropriate means अयोग्य, मतलब there is no problem here, no evident cause of tachycardia, but the patient still is tachycardic. So that is called as inappropriate, also called as chronic non-paroxysmal sinus tachycardia. So this is basically a diagnosis of exclusion. मतलब बाकी कुछ नहीं मिला, आपने सब कुछ देख लिया, तो you can label it as inappropriate sinus tachycardia. Naturally occurs in patient with no evident cause. What is the definition? Inappropriate sinus tachycardia is defined as resting heart rate of more than 100 or in 24-hour Holter monitoring heart rate average mean heart rate more than 90 associated with highly symptomatic palpitations. मतलब पेशेंट का हार्ट रेट भी ज्यादा है और पेशेंट इज सिम्प्टोमेटिक, राइट? सो दीस टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड. पेशेंट कैन हैव palpitations और प्री-सिंकपी. प्री-सिंकपी मतलब घबराहट, ऐसा लग रहा है कि मैं चक्कर आ रही है मेरे को या मैं गिरने वाला हूं. Other causes of tachycardia, especially atrial tachycardia, have to be ruled out. Now, how does this inappropriate sinus tachycardia look like? The tachycardia is very sinus, means P wave normal, morphology normal, rate 100 से ज़्यादा, PQRST जैसा आना चाहिए, PR interval, QRS interval T, so everything normal. Important point is, जब patient सो जाता है, तब patient does have a drop in heart rate. Right? If this does not happen, then you are probably dealing with something else. Right? Syncope is rare. Patient may have palpitation with pre-syncope, and जैसा कि बताया, rule out other cause of tachycardia, especially atrial tachycardia. दूसरा differential diagnosis is POTS, Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome. This occurs predominantly in young women and जिनमें स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज नहीं रहता है. पेशेंट डेवलप सिम्टम्स ऑन स्टैंडिंग, बैठे हैं और उसके बाद खड़े हुए तो पेशेंट को चक्कर आने लगा, पाल्पिटेशंस होने लगे. POTS is defined as a heart rate rise of more than 30 beats per minute in absence of orthostatic hypotension. Right? So बैठे रहने से आप जब खड़े हो जाते हैं तो आपका हार्ट रेट 30 से ज्यादा बढ़ता है, 30 बीट से ज्यादा, पर बीपी कम नहीं होता, 20 से कम नहीं होता. So it is not postural hypotension. It is only tachycardia, and it most commonly is due to autonomic dysregulation. For example, एक diagrammatically यहाँ represent किया है कि जब patient बैठा है तो ऊपर तक blood supply जा रहा है, जब नहीं बैठता है, खड़ा रहता है तो blood supply brain को inadequate मिलता है. So naturally, patient heart tries to compensate by increasing the heart rate. So it could be symptoms like shaking, sweating, dizziness, chest pain, fainting, palpitations. ये जो POTS है, Postural Orthostatic Tachycardia, ये is a diverse disease etiology वाला है, मतलब बहुत सारे कारणों से ये POTS हो सकता है. एक तो simple patient is hypovolemic, दूसरा न्यूरोपैथिक हो सकता है due to sensory neuropathy. For example, small fiber sensory neuropathy (SFN) can lead to postural hypertension due to autonomic dysregulation. Patient can have primary hyperadrenergic state. For example, norepinephrine transporter deficiency that can cause postural tachycardia. Or patient could have something like hypermobile or Ehlers-Danlos syndrome. So joint mobility disorders के साथ में भी POTS हो सकता है. Or it could be immune related, like mast cell activation syndrome or autoimmune involvement.
So this has got a diverse etiology, और जब diverse etiology है तो diagnosis and treatment becomes a problem. So this is a tilt table test. Patient को पहले लिटाया जाता है and gradually table का एंगल बढ़ाया जाता है and you just have to see whether the heart rate increases. ये pseudomotor testing किया गया जब there were 39-40 consecutive patients in Cleveland clinic and 74% patient were found to have pseudomotor abnormality, neuropathy कुछ मिली and कई लोगों को distal मिली, कई लोगों को diffuse मिली, कुल मिला के 3/4 of the patient had neuropathy. What do we do in POTS? जैसा कि बताएं, it is very complex diagnosis and so different treatment options. पहला history, orthostatic vitals ले लो, first confirm the diagnosis, ECG ले लो, you are not missing any heart disease. Do electrolytes, urea, creatinine, ferritin, thyroid, cortisol levels. Symptom and hemodynamic criteria meet हो रहा है क्या देखो, 30 से heart rate बढ़ रहा है क्या? Then is the diagnosis clear? ये सब history और इससे diagnosis clear हो रहा है क्या? ठीक है, there is no problem. If the diagnosis is not clear, then consider further evaluation. आपको अगर लग रहा है कि neurological problem है, sensorimotor neuropathy से हो रहा है, then do an EEG, EMG, take a neurology opinion. अगर लग रहा है कि structural heart disease हो सकता है या probably arrhythmia हो सकता है, तो cardiology opinion लो, ECG monitoring करो, Holter monitoring करो, echo करो, stress test करो. अगर ऐसा लगता है कि autonomic neuropathy हो सकती है, तो autonomic testing like tilt table test, Valsalva manual, thermoregulatory spread test, pseudomotor testing, and management भी जो भी आपको cause लगता है. For example, आपको लगता है कि patient को hypovolemia हो रहा है, right? So आप salt intake बढ़ा के देखो उससे कम हो रहा है कि नहीं. अगर लगता है कि cardiac atrophy asthenia हो रहा है, कि हार्ट को आदत ही नहीं इतना पंप करने की या हार्ट वीक हो गया है, सो यू हैव टू डू समथिंग कॉल्ड एज कार्डियोवास्कुलर डीकंडीशनिंग. सो उसमें एक्सरसाइज धीरे-धीरे बढ़ाना पड़ता है ताकि हार्ट को आदत हो, राइट? सो हार्ट कार्डियक एट्रोफी हुई, देयर इज रिड्यूस्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, देयर इज रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया. सो आपको हार्ट को आदत दिलाना है, तो धीरे-धीरे छोटे-छोटे एक्सरसाइज से चालू करना है. फिजिकल काउंटर मेजर्स लाइक स्क्वीजिंग, बॉल स्क्वीज करना है, लेग क्रॉस करके बैठना है, स्क्वाट करना है, मसल पंपिंग करना है, यहां से चालू करना है. धीरे-धीरे यू हैव टू इंक्रीज. अगर आपको लगता है कि वेनस रिटर्न ही कम आ रहा है, सो आपको कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स लगाना है. कभी-कभी आपको थोड़ा जब आप सोते हो तो धीरे-धीरे हेड रेस करके सोने की आदत डालना है ताकि ऑटो रेगुलेशन बेटर हो जाए. तो इतनी वेरिड एटियोलॉजी है पॉट्स की, तो नेचुरली बहुत सारे ड्रग्स उसमें उपयोग किए जाते हैं. जब भी मान लो आपको सॉल्ट एक्सक्रीशन ज्यादा हो रहा है, यू हैव टू रिड्यूस सॉल्ट एक्सक्रीशन, तो आपको पानी बढ़ाना पड़ेगा. साथ में यू कैन गिव मिनरलोकॉर्टिकॉइड, द ड्रग इज फ्लोरोकॉर्टिसोन. अगर आपको वैसे कंस्ट्रक्शन करना है ना, तो आपको मेडोड्रीन देना पड़ेगा. अगर गैंग्लियोनिक रिसेप्टर स्टिमुलेशन करना है, you have to give anticholinesterase inhibitors like pyridostigmine. If you want to prevent vascularization and tachycardia, you can give beta receptor blockers, especially cardioselective, for example bisoprolol. अगर आपको postprandial tachycardia कम करना है, तो you can give peptide release inhibitors like octreotide. अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको डायरेक्टली टैकीकार्डिया कम करना है, तो यू कैन गिव एसिनो ब्लॉकर्स, सेलेक्टिव एसिनो ब्लॉकर्स लाइक इवाप्रेडिन. और लास्टली अगर आप साथ में बीपी भी बढ़ा हुआ है, तो यू कैन गिव सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक लाइक क्लोरिडीन. सो वेरियस ड्रग्स. सो यू हैव टू बेसिकली लुक इनटू क्या कारण हो सकता है पॉट्स का, एंड देन अकॉर्डिंगली साथ में आपको जो मेजर्स पिछले स्लाइड में दिखाए थे वो भी करना है, एंड देन प्रोबेबली यू हैव टू गिव वन ऑफ दीस ड्रग्स टू हेल्प द पेशेंट. थैंक्स अ लॉट. यहाँ हम अपना 23rd लेक्चर खत्म करते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट साइनस ब्रैडिकार्डिया. अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक्स अ लॉट.